हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक होपोनोपोनो हीलिंग सेशन, जहां पे मैं आप लोगों के साथ होपोनोपोनो करने वाला हूं। और कंप्लीटली ये जो मैंने वीडियो बनाया है कंप्लीटली सेल्फ हेल्प हीलिंग के लिए बनाया है। मतलब आप खुद से खुद के इमोशन के लिए किस तरह से आप होपोनोपोनो कर सकते हैं। हो सकता है आपके मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है रिलेशनशिप से लेके करियर से लेके हेल्थ से लेके कोई भी प्रॉब्लम हो, और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इमोशंस आपके माइंड में, जो भी नेगेटिव थॉट इमोशंस और बिलीफ आपके माइंड में चल रहा हो, उसको किस तरह से आप हील कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो जाए और जितने भी नेगेटिव थॉट और इमोशंस है वो क्लीन हो जाए। किस तरह से आप कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए गाइडेड इंस्ट्रक्शन दिया है जो आपको फॉलो करना होगा। और फेथफुली बिलीफ के साथ आपको विश्वास के इस मेथड में ही होपोनोपोनो पे आपको ट्रस्ट करना होगा और बिलीफ के साथ आपको करना होगा। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये जो कंप्लीट सेशन होगा ये इंग्लिश में मैंने रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे हैं कि उनको सेशन जो है वो इंग्लिश में चाहिए। तो फर्स्ट टाइम मैं कंप्लीटली इंग्लिश में सेशन करवा रहा हूँ, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप हीलिंग कर सकते हैं। तो पहले जो मैं पार्ट बना रहा हूँ हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। और इंग्लिश में ये ऐसा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड कुछ वर्ड नहीं होगा, सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल शब्द में आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि कोई भी इसको कर पाए, कोई भी इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो कर पाए और गाइडेड हीलिंग को वो कर पाए। कोई भी नेगेटिव थॉट बिलीफ और जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हो, तो इस वीडियो को रिपीट मोड पे आप कंप्लीटली 30 डेज के लिए करना होगा आपको होपोनोपोनो, ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसको रिपीट मोड पे करते हैं तो आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिव थॉट और बिलीफ की वजह से आप सफर कर रहे हो वो 60% से ज्यादा रिजॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम वो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हो वो रिजॉल्व हो जाए, वो क्लीन हो जाए, वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, तो इस वीडियो को रिपीट मोड में 30 डेज के लिए एटलीस्ट 21 डेज तो मस्ट, क्योंकि एक हैबिट बिल्ड होने में 21 डेज लगता है। तो 21 डेज के लिए आपको रिपीट मोड में इसको करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब मैं अपने वीडियो को ऑफ करने वाला हूं, सिर्फ आप मेरी आवाज को सुन पाओगे, लेकिन आप मैं जो भी बोलता हूँ उस कंप्लीटली आंखें बंद करके आपको उसको फॉलो करना है और विश्वास के साथ करना है, इस मेथड के ऊपर ट्रस्ट होके करना है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं, मेरे स्टूडेंट में मैंने बहुत सारे चेंजेस देख रहा हूँ। उनकी जो बिलीफ सिस्टम है कैसे बिल्ड हो रहा है, कैसे वो अपने लाइफ में चेंज ला रहे हैं। मैं एक सेशन भी करता हूँ, अगर आप मेरे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, अगर पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो हाय, माय नेम इज पिनाक दास। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक होपोनोपोनो हीलर हूँ, सर्टिफाइड हीलर हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, होपोनोपोनो एंड और भी बहुत सारे वीडियोस के बारे में और भी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, ताकि आप आपकी लाइफ में एक बेस्ट वर्शन 2 बन सको और आपकी लाइफ में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सको। दोस्तों, इस हीलिंग सेशन को मैं शुरुआत करने वाला हूं, तो प्लीज आंखें बंद करके एक जगह पे स्ट्रेटली आप बैठ जाइए और जो भी मैं इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं उसको फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके एक जगह पे बैठिए। Close your eyes and listen to this healing music, and now think about your existing challenges on problem or situation that you want to change. You want to or transform this situation right now. In this moment you want to change this situation. This is actually triggering some negative response on you, generating some negative emotions on you. It could be directly related to you, or it is happening something somewhere else, but it is troubling you. This is hurting you, maybe angering you, maybe irritating you, maybe feeling you helpless, maybe feeling you loneliness, maybe feeling you stress and sadness, anything, any negative emotions that triggering right now in your mind. Think about it. What are the existing challenges, problems or situation right now you are suffering and you want to solve that? You want to change it. Think about it. Just close your eyes and think about it. Think.
Alright, alright. Sit straight, close your eyes. First relax for a few seconds. Allow your body and mind to become calm. Close your eyes. Feel the relaxation in your body and mind. Relax. Relax your forehead. Relax your eyes. Relax your nose. Relax your face. Relax your shoulder. Relax your hand. Relax your body. Try to leave your body loose. On your mind, repeat it. Just say to yourself, relax, 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 relax. Now, slowly, keeping your eyes closed, think about your existing problem or a challenge or a situation that you want to resolve, you want to change. Think about it. Think of a existing challenges or a obstacle that you are currently facing in your life. Allow thoughts and feelings of this problem to come up in your mind. Allow all the negative feelings, any feelings and thought about this problem come up in your mind. Come up in your mind. Allow. Now, let's acknowledge what is the problem, the obstacle that is within in your mind. What is the emotion it is causing within me? So continue to keep your eyes closed and observe and identify what feelings are generating within you because of these emotions in your life you are facing, you are suffering. Find out, identify that. Catch the feeling. Is it anger? Is it helplessness? Is it loneliness? Is it frustration? Is it jealousy? Is it stress? Is it sadness? Is it irritating, hurting? Any emotion, try to catch that emotion. That emotion, nothing but a memory running in your subconscious mind. Catch and identify that emotion. Think about it. Think. I'm giving you some time to think about it. Think. Think about it. Now we have find clearly the emotion in our mind. Now let's start the hooponopono on that emotion, because that emotion is nothing but a memory running in your mind. We are going to do hooponopono on that emotion. Close your eyes completely.
listen to this healing music, and whatever I say, repeat with me. Now, take the name of the emotion loudly or in your mind. Example, I'm taking anger, to the anger, to the helplessness, anything that you want, to the loneliness, to the disappointment, any of them, whatever emotion that you identified, take that name and say loudly, I am sorry for whatever is in me that has created this. I am sorry. Take that emotion name and say loudly again, I am sorry for whatever is in me that has created this. I am sorry for this helpless emotion that I have created. I take 100% responsibility for that. Please forgive me. Please forgive me, my family, my parents, my relatives, my sisters, my brothers. Please forgive me. If unknowingly I did any mistakes because of this helpless negative emotion that I have created, please forgive me. Please forgive me for this emotion that I have created. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much for this healing that's happening right now. Because of that, I am healing this emotion and I am resolving this problem, this challenge, this situation that I have created because of this emotion that I have unknowingly, unwanted emotion I created. Thank you, universe, for helping me to heal this emotion. I love you for everything. I love you, universe. I love you so much, universe, for helping me to heal this negative emotion. And I love you, universe, for helping me to resolve this emotion. I love you, universe, for giving me this opportunity to clean and let go this emotion. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, universe. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, universe. Please forgive me. Thank you. I love you. Now, let's sit in a relaxation mode.
Let's take few breath. Keep your eyes closed. Let's take some breaths. Try to do deep breathing fully. Inhale. Exhale slowly. Again. Exhale. Continue few rounds. Deep breathing. Again. Relax. All right. Now, slowly open your eyes. Just rub the both hand harder, more harder, more harder, and apply the heat on your face. And slowly, slowly open your eyes. Now think, how is you feeling? And whatever you are feeling right now, please do comment below. It will motivate me. थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए अभी तक इस वीडियो में और मेरे साथ होपनोपनो हीलिंग करने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ हो। अगर आपको हेल्प हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि इस वीडियो को लाइक करते ही और भी लोगों के पास चला जाएगा जिन लोगों को सच में ज़रूरत है इस हीलिंग का। और आपकी स्मॉल कंट्रीब्यूशन से और किसी का ज़िंदगी बदल सकता है और किसी की ज़िंदगी में बहुत हेल्प हो सकता है। और शेयर करना और हेल्प करना दूसरों को, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज ए ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और एक ज़बरदस्त टेक्निक के साथ, ज़बरदस्त हीलिंग सेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।